everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we're going to make this beautiful table mat or doily, whatever you can call it. It's really pretty. So let's get started. We'll start by making a slip knot. सबसे पहले हम एक slip knot बनाएंगे. And now we have to chain 4. 4 chains बनाएंगे. 1, 2, 3, 4. Now go into the first chain that you made and we have to make a slip stitch to join it. तो यहाँ पे फर्स्ट चेन जो हमने बनाई थी उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इसे जॉइन कर देंगे. नाउ वी हैव दिस टाइनी लिटिल स्पेस ओवर हियर एंड वी हैव टू वर्क इन दिस. अब हमको इस स्पेस में वर्क करना है इस राउंड के. सो वील चेन 3 करेंगे. दिस काउंट्स एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच. ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच की जैसा है. एंड वी नीड वन चेन वन स्पेस ऑल्सो, सो वील चेन वन मोर. सो वी हैव अ टोटल ऑफ चेन 4 नाउ. हमारे पास चेन 4 है. नाउ 1 डबल क्रोशे स्टिच इन द राउंड. एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे राउंड में एंड चेन 1 करेंगे. we'll make one more double crochet stitch in the circle here in the round and chain 1. Another double crochet stitch in the space, chain 1. One more double crochet stitch and chain 1. So basically we need 12 double crochet stitches and the chain 3 also counts as our double crochet stitch. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, chain 1, 7, chain 1, and I'm working over the yarn tail so that it gets secure and then I can cut the extra one. 8, chain 1, 9, chain 1, 10, chain 1, 11, chain 1, 12, chain 1. So I'll just count to make sure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Now we have to slip stitch to the third chain of the starting chain 4 that we made onto the third chain and do a slip stitch to join. So this completes our round 1. तो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया थर्ड चेन पे. फोर्थ चेन पे नहीं किया, थर्ड चेन पे किया बिकॉज वो चेन 1 स्पेस के लिए है. एंड ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट है. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड राउंड नाउ. चेन 3, 1, 2, 3. दिस काउंट्स एज आवर डबल क्रोशे स्टिच. फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच के जैसे है. एंड वी हैव टू मेक वन मोर डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस where we did the slip stitch. तो इसी सेम स्पेस में जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है यहाँ पे हम एक और डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. So now we have 2 double crochet stitches. Chain 1, skip the chain 1 space and make 2 double crochet stitches on the double crochet stitch here. तो इस स्टिच पे हम 2 double crochet stitches बनाएंगे. Then again chain 1, skip the chain 1 space, go on to the next double crochet stitch and make 2 double crochet stitches. 1 and 2. Chain 1, then again skip the chain 1 space, go on to the next stitch and make 2 double crochet stitches. So basically we are working 2 double crochet stitches on every double crochet stitch and a chain 1 on the chain 1. Chain 1, skip the chain 1 and go on to the next and make 2 double crochet stitches. तो हर डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बना रहे हैं और चेन 1 कर रहे हैं बीच में, और जो नीचे की चेन 1 है उसको हम स्किप कर रहे हैं. चेन 1, skip the chain 1, go on to the next, make 2 double crochet stitches. 1, 2, chain 1, and you have to repeat this for the round. So here I have made 2 double crochet stitches on the last stitch here, chain 1 and slip stitch onto the third chain of the starting chain 3 that we made. थर्ड वाली चेन पे slip stitch करेंगे.
This tends to be a little difficult always. Okay, no, one second. Yes, तो इसको हमने ज्वाइन कर लिया. Now let's begin with the round 3. Chain 3 at the beginning, and this counts as our first double crochet stitch. Now one double crochet stitch we have already, and this is the second. See, if you see in between chain 1 spaces, we have sets of two double crochet stitches. So on the first stitch we have one double crochet stitch, and on the second stitch we have to make 2 double crochet stitches. So here we'll crochet 2 double crochet stitches. तो next जो second वाली stitch है उस पे हम 2 double crochet stitches बनाएंगे, and then chain 1. Now skip the chain 1 space. Now again you can see we have 2 double crochet stitches. On the first one we have to make 1, and on the second one we have to make 2. So पहले वाले के ऊपर हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, और सेकेंड वाले डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. So we'll make 2 on the second stitch. Then chain 1, skip the chain 1 space. Again we have 2 double crochet stitches here, 1 on the first one and 2 on the second one. 1 and 2. Then again chain 1, skip the chain 1 space, 1 on the first double crochet stitch. पहले वाले पे एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, सेकेंड वाले पे 2 बनाएंगे, 2 on the second one, and chain 1. And this is how you have to complete this round. इसी तरीके से आपने ये round complete करना है. So I have done 2 double crochet stitches on the last stitch here, chain 1 and slip stitch onto the third chain of the beginning chain 3. तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे थर्ड चेन पे, और ये वाला राउंड भी हमारा हो गया कंप्लीट. नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर नेक्स्ट राउंड. नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे चेन 3, 1 2 3, एंड नाउ वी हैव अ सेट ऑफ 3 double crochet stitches. So you have to crochet 1 double crochet stitch on the first stitch, 1 double crochet stitch on the second stitch, and 2 double crochet stitch on the third stitch, and then chain 1, skip the chain 1 space, and you have to repeat that all the way around. तो अब हमने क्या करना है, पहले वाले पे एक डबल क्रोशे स्टिच करना है, सेकंड वाले पे एक डबल क्रोशे स्टिच करना है, और थर्ड वाले पे 2 डबल क्रोशे स्टिच करने हैं, और फिर चेन 1 करना है, और इसी तरीके से हमने रिपीट करना है. सो वी ऑलरेडी हैव 1 डबल क्रोशे स्टिच हियर विच इज़ आवर चेन 3, 1 डबल क्रोशे स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट स्टिच पे एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, एंड थर्ड वाली पे 2 करेंगे. सो 2 डबल क्रोशे स्टिच ऑन द थर्ड स्टिच, 1 and 2, chain 1. Now again we have 3 double crochet stitches here, 1 on the first one, पहले वाले पे एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, 1 डबल क्रोशे स्टिच इन द सेकेंड वन, सेकेंड वाले पे भी एक करेंगे, और थर्ड वाली पे 2 करेंगे. सो 2 डबल क्रोशे स्टिचेस ऑन द थर्ड वन, 1 and 2. Then chain 1 again, skip the chain 1, then again 1 double crochet stitch, 1 double crochet stitch, and 2 double crochet stitches, 1 and 2, and chain 1. So this is how you have to do for this round. So I have completed this round, almost I have completed this round by doing 2 double crochet stitches on the last double crochet stitch here. Now I'll chain 1 and I'll slip stitch onto the third chain of the starting 3 chains that I made. तो chain 1 करने के बाद ये जो 3 chains हमने starting में बनाई थी उसकी third chain पे जाके हम slip stitch कर देंगे. So this completes this round, and now let's begin with the next round, and this is how you have to keep doing until you get your desired length. इसी तरीके से आपने इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है जब तक आप अपने डिज़ायर्ड लेंथ पे नहीं पहुंचते कि आपको कितना बड़ा चाहिए. तो सिर्फ यही करना होता है आपने कि जैसे यहाँ पे 4 सेट्स हैं, देखिए 4 डबल क्रोशे के सेट्स हैं, तो पहले 3 में हम एक एक करेंगे और लास्ट वाले में 2 करेंगे. फिर नेक्स्ट में जब हमारे पास 5 हो जाएंगे तो पहले 4 में हम एक एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे और 5th वाले में हम 2 करेंगे. इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो ये बड़ा बनता जाएगा. यू हैव टू कीप रिपीटिंग दिस पैटर्न. लाइक नाउ यू हैव
a set of 4 double crochet stitches here. So first 3 we have to do 1 double crochet stitch, and on the fourth one we have to do 2, and then chain 1 and then repeat. And in the next round you'll have 5 sets of 5 double crochet stitches. So in that, what you have to do 1 double crochet stitches in the first 4 stitches, and then on the 5th one you have to do 2, and then chain 1 and repeat. So this is how you have to keep repeating until you get your desired length of how big you want it to be. So I'll show you this round as well. Chain 3 at the beginning. So this is our first double crochet stitch. 1 double crochet stitch in the next stitch. Next stitch में एक double crochet stitch करेंगे. 1 double crochet stitch in the next stitch and 2 in the next वाले में 2 करेंगे. तो अब बेसिकली आप देखेंगे तो हमारे पास 3 स्टिचेस के ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच है और फोर्थ वाले में 2. Then chain 1, skip the chain 1 space. Again we have 4 here. So 1 on the first one, 1 double crochet stitch on the second one, 1 double crochet stitch on the third one, and 2 double crochet stitches on the fourth one. तो हमने इसी तरीके से करते जाना है और बहुत जल्दी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बन जाता है. Then again chain 1, और chain 1 करना नहीं भूलना. You don't have to forget. We have to do chain 1 in between these sets, otherwise we won't get this pattern. Then again 1 double crochet stitch on the first stitch, 1 double crochet stitch on the second stitch, 1 double crochet stitch on the third stitch, and 2 double crochet stitches on the fourth stitch. And then chain 1. So this is what you have to do for this round. Now I'll be doing 2 double crochet stitch on the last double crochet stitch of the previous round. Chain 1 and slip stitch onto the third chain, top of the third chain. Don't worry if it's curling, you can just flatten it and it'll become straight. तो ये देखिए, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है. मैं नेक्स्ट राउंड आपको दिखा देती हूँ एंड उसके बाद इसी तरीके का पैटर्न आपने करते जाना है जितना बड़ा आपको चाहिए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बॉर्डर कैसे करना है इसका. सो वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट राउंड विच इज़ similar to all the previous rounds. Chain 3 at the beginning, which is our first double crochet stitch, 1 double crochet stitch onto the next stitch, 1 double crochet stitch onto the next stitch, 1 double crochet stitch onto the next stitch, and 2 double crochet stitches on the next stitch. 1 and 2. So in the previous round we had 1 2 3 4 5 double crochet stitches, and here we have 1 2 3 4 5 6, and this is how it will keep on increasing and you'll have a bigger doily. Chain 1, then skip the chain 1 space, 1 double crochet stitch onto the first stitch, 1 onto the second, 1 onto the third, 1 onto the fourth, and 2 double crochet stitches onto the fifth stitch. तो इसी तरीके से आपने इसको रिपीट करना है एंड देन चेन 1. तो अब देखिए, इसी तरीके से आपने रिपीट करना है इस राउंड को, और आगे कई राउंड्स को जितना आपने बड़ा बनाना है उस हिसाब से. तो जैसे आपके पास यहाँ पे 5 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं, तो आपने लास्ट वाले स्टिच पे 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. फिर अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये 6th वाले पे नेक्स्ट राउंड में आप 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. फिर उसके अगले राउंड में आप 7th वाले स्टिच पे 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, और इसी तरीके से आपने करते जाना है. सो यू हैव टू कीप डूइंग एन इंक्रीज ऑन टू द लास्ट स्टिच ऑफ एवरी सेट, एंड यू विल हैव अ बिग you can say table mat or a doily or whatever you like. So I'll meet you back after doing a couple of rows, a couple of rounds, and show you how to do the border. So मैंने इसे उतना बड़ा बना लिया जितना मुझे चाहिए था, आप देख सकते हैं. ये देखिए, I have made it as big as I wanted.
You can make it as big as you want it to be. You can make it small or big. It's totally up to you, whatever size you want. And then now, like I've done an increase in the last stitch, मैंने 2 double crochet stitches किए यहाँ पे. I've done 2 double crochet stitches now. So I'll go into the third chain and make a slip stitch. And now I have to fasten off because I'm using another color for the border. If you want to use the same color for the border, then you can continue from here, but I'm going to use a different color. So I'll be attaching a different color here. So I'm going to chain 1 and fasten off. तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं chain 1 करके fasten off कर रही हूँ. बट आप अगर सेम कलर से बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आपको fasten off करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं. So I'll be starting from here itself, the chain 1 space over here. So I'm going to attach my next color. तो मैं next color यहाँ पे attach कर दूँगी. Make a slip knot बना के we'll put the needle here and we'll join it with the slip knot. Chain 1. That's it. Now chain 4. 1, 2, 3, 4. This will count as our stitch, which is a treble crochet stitch. तो treble crochet stitch की जैसे ये count करेगा हमारा chain 4, and we'll chain 1 and we'll make another treble crochet stitch in the same space. तो इसी same chain 1 space में हम एक और treble crochet stitch बनाएंगे. So we'll yarn over twice, go into the chain 1 space, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. I did a mistake, I'm so sorry. Actually the color is really dark, but I want this color for the first row of the border. So yarn over twice, go into the chain 1 space, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, and yarn over, pull through 2. So we have done a V stitch over here. Okay, now chain 1, skip 2 stitches here, go into the third stitch and make a V stitch. तो हमें यहाँ पे V stitch बनाना है with a treble crochet stitch. So we'll yarn over twice, go into the third stitch, pull through 2, pull through 2, pull through 2, chain 1 and make another treble crochet stitch in the same space. So we have 2 V stitches here. See, now you'll be able to see it properly. Then again chain 1, skip 2 stitches, go into the third one and make a V stitch with the treble crochet stitch. तो ये ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे treble crochet stitch कर रही हूँ जिसमें 2 बार yarn over होता है, और 2 को skip करके थर्ड वाले में V stitch करें. V stitch के लिए क्या करना है, पहले एक treble crochet stitch करना है. For the V stitch we have to make a treble crochet stitch, then we have to chain 1 and make another treble crochet stitch in the same stitch, and that is our V stitch. तो हमें 2 treble crochet stitches करने बीच में chain 1 करके, तो इससे हमारा ये V stitch बनेगा. I think I'll put a light color underneath so that you'll be able to see the stitches properly. So now you'll be able to see the stitch correctly. So I've kept the white color cloth underneath. अब आपको ये stitch सही से दिखेगा V stitch, because ये मैं brown color use कर रही हूँ actually, तो थोड़ा dark है, तो इसीलिए problem हो रही है मुझे. So chain 1 and skip 2 stitches, chain 1 करके 2 stitches को skip करेंगे. We'll go into the third one, make a treble crochet stitch, third stitch में treble crochet stitch करेंगे, फिर से chain 1 करेंगे और उसी same stitch में एक और treble crochet stitch करेंगे. So we'll do a treble crochet stitch in the same stitch again and make a V stitch and then chain 1. So this is how we have to complete this round. So I'll complete it and then I'll show you what to do next. You have to just keep doing
you have to skip 2 stitches and do V stitches and followed by chain 1 spaces. So I'll meet you back after completing the round. So here I've almost finished the round. My round almost finished कर दिया है. Now you can see I have 1 2 3 4 stitches left and I have to skip 2 and do into the third one, and then I should be having 2 and then my starting would be there, but I have only 4 stitches. So what I'll do is I'll skip 2, make a V stitch in the third stitch, and after skipping 1 over here I'll just join it with the 4th chain of the starting 5 that I made. तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 4 ही चेन्स बची हैं, जबकि यहाँ पे मेरे पास 5 होनी चाहिए, बट क्योंकि मैंने अपना लेंथ जिस हिसाब से रखा है उस हिसाब से मेरी स्टिचेस है, और आपकी भी कम ज़्यादा हो सकती हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी. देयर इज नथिंग, नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस, because it won't even show, you know, 1 or 2 stitches won't matter in this. So what I'm going to do is I'm going to skip 2 and go into the third one and make a V stitch as I was making. थर्ड वाली में मैं वी स्टिच बना दूंगी एक, विच इज़ अ ट्रेबल क्रोशे स्टिच, chain 1 and a treble in the same space, and then again chain 1. तो वी स्टिच बना के मैंने chain 1 कर लिया है, and now I'll be slip stitching onto the 4th chain of the starting chain 3 that I made. तो 4th chain पे मैं जाके यहाँ पे slip stitch कर दूंगी, and I'll be slip stitching in the V stitch of the starting of the first V stitch to give it a neater look, and then I'll chain 1 and I'll fasten off because I'm going to use another color now. तो ये जो है ये एक्चुअली V stitch है, एक इसको स्टेम की तरह सोच सकते हैं, और ऊपर इसके एक फ्लावर आएगा. तो मैं फ्लावर पिंक कलर में बना रही हूँ, तो मैंने ये ब्राउन कलर रखा. आप ग्रीन भी रख सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा दिखेगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू fasten off and I'm going to use another color. You can use whichever color you feel it's looking nice. You can just play with the colors. So now my V stitches are ready, and now I have to do the flowers on top. So I'll be doing it with the pink color. You can use whichever color you like. So let's start with the last round. Now I'm going to attach my next color. यहाँ पे मैं attach कर दूँगी next color. So in between these two V stitches, the chain 1 space is there. I'm going to attach it there. Chain 3, 1 2 3, and in the V stitch we have to do 5 double crochet stitches. So we'll work 5 double crochet stitches here. V stitch में हम 5 double crochet stitch करेंगे. 1 2 3 4 and 5. Now pull the loop a bit and take out your needle. Loop को थोड़ा pull करके needle निकाल देंगे. We'll go into the first double crochet stitch that we made. We'll put the needle in the first double crochet stitch that we made. पहली stitch में डालेंगे needle. We'll put the needle in the loop, tighten it. उसको tighten करेंगे, and we'll pull the loop through the double crochet stitch that we made at the beginning, the first double crochet stitch. Now chain 3, 1 2 3, and make a single crochet stitch in between here at the back. Okay, then again chain 3, 1 2 3, we'll put the needle again in the middle and make a single crochet stitch. Then again chain 3, 1 2 3, single crochet stitch. So we have a total of 3 chain 3s, and now chain 3 again, 1 2 3, and single crochet stitch in the chain 1 space in between these two V stitches. तो इन दो V stitches के बीच में जो space है वहाँ पे हम single crochet stitch करेंगे. Okay, then again chain 3, 1 2 3, and we have to repeat this again. 5 double crochet stitches in the V stitch. V stitch के बीच में हम 5 double crochet stitch करेंगे. 1 2
3, 4 and 5. Then we'll pull the loop a bit and take out our needle. Loop को pull करके needle निकाल देंगे. We'll go into the first double crochet stitch that we made. We'll put the needle in the loop, tighten it and pull it through the first double crochet stitch that you made. Now again chain 3, 1, 2, 3, and if you just twist it, you can see this hole over here. We have to go in and make a single crochet stitch. Then again chain 3, 1, 2, 3, go in the same space and make a single crochet stitch. Then again 1, 2, 3, chain 3, go in, make a single crochet stitch. Then chain 3, 1, 2, 3 and single crochet stitch in the chain 1 space here in between 2 V stitches. तो जो V स्टिच के अंदर हम फ्लावर बना रहे हैं और जो V स्टिचेस के बीच में चेन 1 है उसमें हम सिंगल क्रोशे स्टिच करते हैं. So this is how it's looking now. ये फ्लावर्स देखिए ऐसे दिखेंगे. All around it will look like that. It will look so pretty. So I'll show you once more and then I'll complete it and then I'll show you how it looks. तो मैं एक और आपको दिखा देती हूँ और फिर आपने इसी तरीके से इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है जब तक आपका ये पूरा राउंड कंप्लीट ना हो जाए. So chain 3 at the beginning, 1, 2, 3. In the V stitch के अंदर 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. We'll make 5 डबल क्रोशे स्टिचेस. 1, 2, 3, 4 and 5. Then we'll pull the loop a bit. Loop को थोड़ा pull करेंगे. Needle slide down कर देंगे. Needle निकाल देंगे. We'll remove the needle. We'll go into the first double crochet stitch that we made. पहले double crochet stitch में जाएंगे. We'll put the needle in the loop. We'll pull it and pull it through the double crochet stitch. And here you have the small loop in which you have to work now. Then chain 3, 1, 2, 3. Put the needle in the center and make a single crochet stitch. Single crochet stitch करेंगे. फिर से chain 3, 1, 2, 3. And then again we'll go in the same space में जाके एक और single crochet stitch करेंगे. Then again 1, 2, 3, chain 3, another single crochet stitch. Another single crochet stitch in the same space. उसी same space में फिर से एक single crochet stitch करेंगे. Now chain 3, 1, 2, 3 and single crochet in the chain 1 space here. This is how you have to complete this round. So you have to do it in every one. You have to do the flower in the V stitch and single crochet stitch in the chain 1 space. And I'll complete the round and then I'll show you how it looks. I have completed the round and I'm on my last V stitch here. मैं last V stitch पे हूँ और यहाँ पे एक flower बनाएंगे फिर से. So we'll make 5 double crochet stitches. 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 double crochet stitches बना लिए हमने. Now we'll take out our needle. We'll put it in the first double crochet stitch that we made. We'll put it under the loop and we'll pull it through the double crochet stitch. Then chain 3, 1, 2, 3, single crochet stitch in the round. Then chain 3 again, 1, 2, 3, one more single crochet stitch in the round. Then chain 3 again, 1, 2, 3, another single crochet stitch in the round. Chain 3, 1, 2, 3 and single crochet stitch in the chain 1 space where we started. Chain 1 and fasten off. Now you can just take a tapestry needle and weave in these ends. So we'll take a tapestry needle and weave in these ends. Tapestry needle की मदद से हम इसे weave in कर देंगे. जितने भी ends हैं उन्हें हम weave in कर देंगे. We'll just go in a couple of stitches.
and then cut the extra yarn. एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे यहाँ से. इसी तरीके से ये वाली भी वीव इन कर देंगे. एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. ऐसा दिख रहा है ये. बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है. आई होप यू ऑल लाइक द ट्यूटोरियल. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू click on the bell icon. You'll be notified whenever I upload my new video. Thank you so much for watching. Keep crocheting, stay safe, be happy. Bye bye.